ओके, सो पहले निफ्टी देख लेते हैं। उससे पहले एक बात ध्यान में रखो, आज 12:30 बजे फेडरल रिजर्व की मीटिंग है अमेरिका में। एंड उसमें क्या अभी इंटरेस्ट रेट हाइक का डिसीजन आता है, उसके बेसिस के ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। अभी ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन 25 से 50 बेसिस पॉइंट की है फेड रेट का हाइक का इंक्रीजन। बट मेन थिंग है, अगर फेडरेशन जो जेरोम पॉवेल है, अगर वो बता रहे कि अभी इसमें आगे से पीवोट चालू होंगे। पीवोट मीन्स कि प्राइस रेट इंक्रीज इंक्रीज तो होंगे, बट वो जो इंक्रीज की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो मार्केट एक अच्छा रिएक्शन देगा और अच्छा बुलिश साइन देगा। तो अभी हम फिलहाल देख लेते हैं, मार्केट सिर्फ लेवल्स की बात करते हैं और बाकी 12:30 के बाद जो भी मार्केट रिएक्शन रहेगा वो कल ट्रेड करेंगे लेवल्स के ऊपर। पहले देख लेते हैं। कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से कि 200 पॉइंट गैप अप होने वाला है, बट कुछ हुआ नहीं ऐसा। और पूरा जो रैली था यूएस मार्केट में वो फिजल आउट हो गया। मार्केट ओपन हुआ 640 एंड 702 के बीच में। उसके बीच में ही ये अटका रहा एंड देन आपको मिला सीधा साइडवेज मोमेंट, रिजेक्शन मिलता रहा रेजिस्टेंस जोन के अंदर, और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस रिजेक्शन लेके इसके आसपास ही क्लोजिंग आई है। तो अपने लिए सिंपल है निफ्टी में, अगर कल मार्केट कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, सो व्हाट वी हैव टू डू, इसके अंदर जब तक है कुछ भी साइड का ट्रेड नहीं लेना है। 702 के ऊपर ब्रेकआउट होकर सस्टेन हो गया तो आपको एक अच्छी अपसाइड रैली मिल सकती है। अगर 640 के नीचे गया तो एक फ्लिप जोन तक आपको एक रैली मिल सकती है। एंड फ्लिप जोन के नीचे अगर ट्रेड होना स्टार्ट किया तो आपको डाउन साइड के टारगेट मिल सकते हैं। सिंपल है, सेम लेवल कल जो थे वही एप्लीकेबल है, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्लिप जोन और रेजिस्टेंस जोन के बीच में अगर मार्केट कल ओपन होता हुआ दिखे तो मेन बिग जो मोमेंट है ये रेजिस्टेंस जोन के ऊपर या फ्लिप जोन के नीचे ही मिल सकता है। तब तक इसका इतना जो 100 पॉइंट का जो रेंज है उसमें आपको बड़े बड़े मूव्स अप या डाउन मिल सकते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो सपोज ये सिनारियो डिस्कस हो गया, अब क्या करें अगर मार्केट रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ओपन हो गया। तो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर ओपन हो गया तो 743 तक आपको एक मूव दे सकता है। 743 के ऊपर अभी कैसे प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है वो देखना रहेगा। सो लेट मी एडजस्ट अ बिट। ओके, सो 743 तक आपको एक मूवमेंट दे सकता है मार्केट, बट 743 के पास अगर प्राइस एक्शन कुछ ऐसा रिजेक्शन टाइप का बन रहा है तो देर विल बी चांस 743 एक फ्लिप लेवल के तौर पे काम करेगा और रेजिस्टेंस जोन तक खींच के आएगा। तो आपको एक छोटा सा पुट ट्रेड मिलेगा 743 से लेके यहाँ तक। अगर प्राइस इसके बीच में फंस गया 770 या 743 तो कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। प्राइस इसके बीच में अगर ओपन हो रहा है तो 770 के ऊपर बाय बनेगा, 743 के नीचे एक छोटा रेजिस्टेंस जोन तक ट्रेड बनेगा आपका सेल साइड। और रेजिस्टेंस जोन के नीचे आपको एक ब्रेकडाउन मिला तो आपको एक 640 तक का एक ट्रेड मिलेगा और 640 पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। और देन इसके नीचे अगर जा रहा है तो फ्लिप जोन तक आपको एक टारगेट मिल सकता है। तो ये रहेगा आपका सिंपल। यहाँ पे खुला तो इसके ऊपर आपके पास सब लेवल्स है, लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुक करते जाओ और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। इसके नीचे भी आपके पास लेवल्स है, प्रॉफिट बुक करते जाओ और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर नीचे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, ये जोन मेजर सपोर्ट जोन और फ्लिप जोन के बीच में तो जब तक कोई भी साइड एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं देगा तो आपको एक बड़ा मूव नहीं मिलेगा, इसके बीच में ही फंसा रहेगा और बड़े बड़े मूव्स इसके बीच में ही देता रहेगा। तो ये सब जोन जो है वो कल एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। अगर गैप अप हो गया 770 के ऊपर तो वेट कीजिए 743 पे कैसा मिल रहा है। यहाँ से अगर बाउंस दे रहा है तो आप बाई करेंगे, या फिर रेजिस्टेंस जोन तक आने देंगे। यहाँ से अगर बाउंस दे रहा है तभी बाई करेंगे और फिर अप साइड के लिए आप प्ले करेंगे। तब तक के लिए कुछ ज़्यादा क्वांटिटी या फिर कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं लेना है आपको। जब तक हो सके उतना आपको लेवल्स के बीच में ही काम करना है। जब तक जोन के बीच में, तब तक आपको जोन के बीच में स्काल्पिंग ही मिलेगा।
जैसे यहाँ जोन से लेके यहाँ जोन तक आपको मोमेंटम मिला, फिर वापस ये जोन, ये लेवल है, ये अपना लेवल लिख लीजिए आप, 571 से लेकर 572 का एक छोटा सा लेवल है। तो यहाँ से भी एक आपको बाउंस मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रीवियस बाउंस यहाँ से दे चुका है। और बाकी कुछ ज़्यादा तो इसमें है नहीं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो निफ्टी के रिलेटेड। एंड अभी मैं फ़िलहाल साथ में बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ, एंड देन आपके क्वेश्चंस मैं लूँगा। तो आज देखेंगे बैंक निफ्टी में भी कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। 986 को होल्ड किया और 130 के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं दे पाया प्रॉपरली। फॉलोअप बाइंग भी नहीं आई और फॉलोअप सेलिंग भी कुछ ज़्यादा नहीं आया। तो मतलब अपने पास 986 से लेके 130 तक का पूरा रेंज हो गया है। ये रेंज के अंदर है तब तक आपको ऐसा स्कैल्पिंग ट्रेड ही मिलता रहेगा। सपोर्ट पे खरीदो और रेजिस्टेंस पे बेचो, और ये आपका रेजिस्टेंस जोन रहेगा, वो एक कल के लिए एक फ्लिप जोन टाइप बनेगा। सो सपोज फर्स्ट सिनारियो है कि गैप अप ओपन हो रहा है, अगर 44 130 के ऊपर ओपन हो रहा है और फर्स्ट कैंडल ही सीधा बुलिश कैंडल बना रहा है, तो उसको चेज नहीं करना है। 203 पर देखेंगे कि यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर बिल्डअप अपसाइड हो रहा है एंड देन कोई भी एक कैंडल आपको बियरिश कैंडल या फिर एक सेलर विक वाला रिजेक्शन वाला कैंडल मिल रहा है और ये ब्रेकडाउन दे रहा है 203 को, तो आपको एक छोटा ट्रेड मिलेगा एक 44 130 तक, एंड देन आपको मिलेगा रेजिस्टेंस जोन तक। इसके नीचे गया तो आपके पास लेवल है सब। यहाँ पे आपको नया ट्रेड, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो आपको नया ट्रेड लेना है 986 940 886 825। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करते जाना है और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। कल हो सके तो आप इन द मनी में ही ट्रेड कीजिए। उसके अलावा आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर रहे हो तो 12:30 से पहले ही आउट ऑफ द मनी ट्रेड कीजिए। बाकी कुछ ज़्यादा कोई 1:30 बजे के बाद आप आउट ऑफ द मनी में प्ले करने की कोशिश ना करें। ठीक है, तो ये हो गया। अगर गैप अप ओपन हो रहा है 203 या 130 के आसपास, अगर गैप अप ओपन होकर सीधा एक सेलिंग कैंडल आ रहा है कि फर्स्ट 15-20 मिनट में डायरेक्ट सेलिंग कैंडल नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट कैंडल बना रहा है या ऐसा बायर विक वाला कैंडल बना रहा है, और उसके बाद आपको एक बाय ट्रेड मिलेगा जो आपको 130 203 270 एंड 322 यहाँ तक आपको मैक्स अपसाइड लेके जा सकता है। इसके ऊपर का अगर कुछ प्राइस सेटअप बनेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। सो रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कोई भी आप पुट ट्रेड या सेल ट्रेड लेंगे वो आपका रहेगा काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड में आपको रहेगा पोजीशन साइज छोटा रखना है और स्टॉप लॉस भी छोटा रखना है। एकदम स्ट्रिक्ट ट्रेड होना चाहिए अगर आप रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सेल ट्रेड ले रहे हो। रेजिस्टेंस जोन के नीचे आपको ट्रेड मिलेगा, बट यहाँ पे देखोगे तो पूरा 1 घंटा साइडवेज ही बिता दिया इसने, अप डाउन करके। मतलब यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम डीके ही किया है। तो सपोज गैप डाउन अपन हो रहा है रेजिस्टेंस जोन के नीचे, और सपोज 986 या 940 के बीच में फ्लैट या नेगेटिव ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर 986 के ऊपर जा रहा है तो उसको जाने देंगे, यहाँ तक उसको जाने देंगे। अगर यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है और बार बार रिजेक्शन मिल रहा है उसको, देन यहाँ से अपना बनेगा एक फ्रेश सेलिंग जिसको वो लेके आ सकता है 986 940 पे आपको मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। और 940 पे अगर कोई बुलिश कैंडल बना रहा है या बायर विक वाला, ऐसा बायर विक वाला कैंडल बना रहा है, देन आपको एंटर करना पड़ेगा 940 वो कैंडल के ऊपर, एंड स्टॉप लॉस रहेगा उसके जो लो है कैंडल का लो, उसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस रहेगा। एंड देन आपका रहेगा ये 986 इमीडिएट टारगेट, बट वो कुछ बड़ा टारगेट नहीं है तो आपको कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। एंड 986 के बाद सीधा यहाँ तक आप एक टारगेट एम कर सकते हो अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बना तो। सो 940 पे अगर बुलिश कैंडल नहीं बन रहा है, 940 को ब्रेक कराए तो आपका सीधा टारगेट मिलेगा 886, एंड देन यहाँ से अगर बुलिश कैंडल बना तो आप वापस अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। और यहाँ पे आपका मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आपका सस्टेन होना स्टार्ट किया
सो आप बाय ट्रेड लेंगे, अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना तो छोटा ट्रेड रहेगा ये 130 का, बट इसके ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया तो आपके पास 203 पे सीधा टारगेट हिट होगा, 270 पे दूसरा टारगेट हिट होगा, और यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। एंड यहाँ तक आपका लास्ट जो रिमेनिंग ट्रेड रहेगा उसका आपका कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लेके यहाँ तक एम कर सकते हो अपसाइड के लिए। सो आप मेन लेवल्स जो है 940 886, यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बन रहा है तो आप बाई करेंगे। रेजिस्टेंस जोन पे अगर बुलिश कैंडल या सेल कैंडल बन रहा है, बियरिश कैंडल बन रहा है, तो आप यहाँ से बाई या सेल करेंगे। एंड 203 जो है यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बन रहा है तो आप बाई करेंगे, अगर यहाँ से बियरिश टाइप ऑफ कैंडल बन रहा है तो आप यहाँ से सेल करेंगे। और सेलिंग में मैक्स टू मैक्स आपका नीचे की साइड पे टारगेट रहेगा ये फ्लिप जोन। फ्लिप जोन पे नो मैटर वॉट, अगर फ्लिप जोन पे आपको प्राइस आता हुआ दिख रहा है तो आपको नो मैटर वॉट आपको इसको बुक करना ही करना है, आपका पुट ट्रेड। एंड जो भी आगे रहेगा वो आपका इसके नीचे का जब ब्रेकडाउन रहेगा तो आपको फिर नए लेवल्स ये ओपन हो जाएंगे 650 और 580 तक। बट बायर के लिए रिस्क रिवार्ड अच्छा रहेगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बना रहा है तो आपको एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ से 886 940 और ये तीन लेवल्स जो है, अगर फ्लिप जोन पे आपको कोई बुलिश कैंडल दिखा तो आप 825 886 एंड 940 तक का आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बट सेकेंड हाफ में बनेगा तो बेटर है अवॉइड कीजिएगा जितना हो सके उतना। एंड बेटर है एक उसमें ट्रेड करो आप जितना हो सके इन द मनी में। आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो अगर साइडवेज हो गया 30 मिनट्स के लिए तो वो पूरा प्रीमियम प्रीमियम को आपको पूरा डीके कर देगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सिंपल सेटअप कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। बाकी पॉसिबल रहेगा तो मैं लाइव आने का कोशिश करूँगा कल ड्यूरिंग एक्सपायरी, बट फ़िलहाल मैं टेलीग्राम पे कल बने उतना अर्ली मॉर्निंग में एक्टिव रहने का ट्राई करूँगा। So if anyone have any questions, do post here or post in the Telegram group. Link already is in the description of the video. So if anyone have any question or doubt, they can ask here or directly in the group. I will try to respond you as early as possible. ठीक है, thank you for watching. All the best for tomorrow and trade safe. सो अभी इतना ऑब्जर्वेशन अपने को निफ्टी बैंक निफ्टी में दिख रहा है। ये चार्ट्स भी मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ तो आप वहाँ से भी ये नोट डाउन कर सकते हो। सो फॉर द people who understand English, so let me cover this thing in English. So for Nifty, for Nifty, as we observed yesterday, like the SGX Nifty at the time when I was recording the video was showing a 200-point gap up, but it just fizzled out the rally in the US market yesterday, and it just gap up between 640 and between the resistance zone. So what happened today? It went up, but this resistance zone is the pain for Nifty to hold it below it. So it was keep on facing the resistance and it pull it down till 640, and from this 640 range it tried to bounce but it couldn't sustain above it. So if tomorrow Nifty open between resistance zone and flip zone, so you will be getting a moves in this big 100-point range, and this 640 will be working as your flip zone if the market is trading between resistance zone and flip zone. Like it will come here and it will bounce from 640 and will try to achieve the target in this flip zone, resistance zone. Let's say if it break down, retest, then it will try to go down till flip zone. So as far as if Nifty will be trading in between flip zone and resistance zone, just consider this 100-point as your scalping between resistance zone and flip zone. But the big momentum will happen if it is crosses above resistance zone, then you will get 743, then this is 772, 772, and
I already mentioned. So you can get 770, or you can say 772, then 818, and this 840 to 845 will be your maximum target for tomorrow. And if it is going above 860, then there will be chance that maybe tomorrow or day after tomorrow it will reach till 918. So this was a scenario if it is opening and trading in between this zone and it gives the breakout. So 743 you have to book most of the profit, 770 you have to book the next partial profit, and then you keep the stop loss or trail the stop loss on your cost to cost and aim for 818 and then 840. Here no matter what you have to book all the profit that you have in your long trade. And if it is giving the breakdown of the flip zone, then this 570 will be your first target, 552 will be your immediate target. But book the profit on each and every level. Don't just hold the profit expecting to reach till this support zone. You have to keep on booking the profit and let it take the profit from the market. Don't leave the money that you are watching. Once you see the level, try to book partial profit. So this was the scenario if it is opening in between. So if it is gives the breakout of this resistance zone, then it will be the uptrend. If it is gives the breakdown of this flip zone, then it will be downtrend. Till the time you will be just doing the scalping in between the flip zone and resistance zone. Now let's say if it is opening gap down below the flip zone, let's say if it is opening between 570 and the flip zone. So what will be the scenario? That flip zone will work as a resistance if the price is below this. So you have to observe the price action here, and if it is giving the breakout above, then you will go for the buy trade, which will lead you to the 640, and next target will be your resistance zone. But in between, mark this swing. This swing is of 655. So small level will be there, 655, to watch out for. Now if the price action is showing that it is not able to break the top, so there will be the chance that we will see the down moment, which will lead it to 570, 552. Here you should book all the profit, and if it is going to touch this major support zone, then you have to exit everything. No matter what, you have to exit everything from your trade. Book the profit overall here, and if it is making again bullish candle here, then you can reverse your trade to plan for the CE. 552 and 570 will be your target. So far we discussed two scenarios. One is if it is opening either here or here, so this is in between the range. Second scenario we discuss is opening below the flip zone. Now the third scenario is opening above the resistance zone. Let's say if it is opening above 743 or between the resistance zone, then we have to observe the price action over 743 to 770. If it is taking resistance, then quick small trade for the downtrend or downside you can see till resistance zone. So if you take the put, aim for this target, and here you will see that you have to book the profit in this zone, because since the price is above resistance zone, so you have to take the sell trade as a counter trade, in which you will be having small profit and small loss, and with the small trading size your trading quantity will be also less than your regular one. And once you see that it is touching the resistance zone, you have to book the profit, and then you have to wait, let the price action, because price will definitely get stuck in this zone for sure, like it was stuck at here. So it will stuck a bit, and then if it is making again coming out on the above side, above the resistance zone, then you can again change your trade into the bullish trade, and then aim for 743 and 770. So this will be your scenario if it is opening here, if it is going up, rejecting, then this trade, and then this trade. And let's say if it is opening in between 770 and 743, and in morning you are not getting any momentum, so it is just stuck at between these two level, then breakout on either side you will be able to get the small trade. So if it is breaking 770, then you will get 818, 840 as your target. Here you have to book all the profit. Above this, it is just a 20 points above, like 860 will be your ultimate target. No matter what, you have to book all the profit here, and once it's able to sustain, then
this could be like a short covering move which can lead to 918, but I'm not expecting that much big move, yeah, if it is trading here, because if gap up has to be done, then it will be already giving you gap up of 100 points, then it will be sufficient to reach till 860, because it will, right now the closing is 660, so maybe gap up will be in between this zone and then it can move up on the breakout of 18770. So far this much is the scenario for Nifty. For the bank Nifty is the same. If you see today, it was stuck at between 130 and 986. So if it is opening between this zone, try to avoid to take any trade. It will be just scalping. If it is trade above 130 and give a kind of a fake breakdown and make a bullish candle at resistance zone, then it will be buy trade. But if the candle is breaking down this resistance zone and closing below, and on the retest of this zone, you can aim for the downside of levels. All these levels are, you have to book the profit. And let's say if it is opening near 203 or 270 in between, so if it is breaking down 203, then one quick target will be 130 and second target will be your resistance zone. No matter what, when there is a zone, you have to book the profit, no matter what. If you are in buy trade and if you are approaching the resistance zone, then you have to book the profit. If you are in sell trade and if you are in sell trade and you are approaching flip zone, and you have to book the profit, and then wait for the price action to how it reacts there. Now let's say if it is opening a gap down or flat, so we have to wait. If it is coming here at resistance zone and making the again break down, then it will be sell trade, and if it is going up, then it will be again buy trade. And let's say if it is opening gap down between 825 886, so let it go below, let it go till the flip zone. Don't catch this falling train or falling knife, don't chase this train. Wait for here to make the price action. There will be chance that it will give quick small 650 level, and then it will be turning out, or it will just sustain and sustain this zone, and then it will give a bullish momentum. So this will be one scenario. There are pretty much a lot of scenario will be happening, but what you have to do, just mark this range. These are the three levels on the upper side, and these are the three level on the below side, and this will be your critical flip zone. So flip zone will be like working as a support as of now. Price can come here and then bounce back. Wherever the price open, if you see the price action and if you see the if it is breaking out or breaking down, basis of that you will take the trade on either side. So hope in English it will be easy for the people, so it will be easy to understand for the people who understand English language. Now anyone have any question can share it, and the Papa Powell will be live in 30 minutes. So let's see how market reacts. Let me see how investing. Anyone have any question can type in the chat box. So let's see what are the expectations as of now. So 78.2% are expecting
that Fed will be increasing between 25 to 50 basis, and 21.8 are expecting that it will be increasing rate between 50 to 75 basis point. So more chances are there it will be 50 basis point, but if it goes to 25 basis point, then the market will go crazy up. But let's see how it go crazy and sustain in this thing. But market can also react based on the post interview of Powell. If he didn't speak anything about pivoting means if there will be the increase in Fed rate, but the increase amount will be less. Like let's say this time he increased with 50 basis point, but next time it will increase with only 25, and then it will increase only with 20. So this point basis will be decreasing, but they will be still keep on increasing the Fed rate. So that is called pivoting. If he speaks anything about pivoting, then it will be the perfect for market to react positively. But if he is doing just a 50 basis point and saying nothing about pivoting, or uh, keep on saying that there is nothing in the market, that inflation is there, but we still have to keep the Fed rate as it is, then market will be consider it as a non-event, and maybe we will see minor gap down or flat opening tomorrow. Because also like if you see the overnight position, so overnight position FIA are mixed to bearish, pro are also mixed to bearish, uh, clients are also mixed to bullish. So clients is just one-sided mixed to bullish, while FII and pro are mixed to bearish. So expecting if tomorrow if we open flat, then there could be the chance that we might see quick down move, but we will not chase the first 15-20 minute movement. Hope it will be easy to understand for everyone. The charts I will be sharing in the group now, so group and the channel, Telegram channel. So you will have these levels, and then you can watch it and mark it on your chart. Okay, so I'm ending the stream. Thank you very much for your time, and all the best for tomorrow expiry.